सलमा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जलाल। और सबसे पहले हमारे सारे सुनने वालों और देखने वालों को सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल याली मदद एंड अ beautiful nice warm evening, and I hope we get more of these evenings and we enjoy the summer and no more fires. It's not nice to have fires, but you don't know. चले, अच्छा है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा 6 बजे तक। हमारे पास बहुत ही commendable noble a woman is here from she is actually in Canada and in India both, but you all know her very well. लेकिन अब उनके क्या हो रहा है, किस तरह की और चीज़ें उनके साथ हुई हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। तो जी या यू नो ऑफ कोर्स जो है बिफोर वी गो ऑन अपना जो सलमा जी को हम जो मुबारकबाद देना चाहते हैं ऑन एयर। इनके घर में छोटी सी पोती आई है, राइट? पोती, या सो मुबारक हो सलमा जी आपको, आपकी फैमिली को एंड अली एंड हिज वाइफ। कल ही पैदा हुई हैं और अब कोविड की वजह से वो लोग ज्यादा लोगों को जाने नहीं देते, तो इंशाल्लाह आज शाम को उनके साथ हम विजिट करेंगे और मीट अप फॉर द फर्स्ट टाइम। उनका नाम उन्होंने दुआ रखा है एंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड अल्लाह ताला उसको सेहतमंद जिंदगी दे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। तो आप हमें जो है फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और लेकिन आपको जो फेसबुक पर जाना पड़ेगा एंड सर्च फॉर द जो है रेडियो सुरसंगम, और दे कैन वॉच अस लाइव राइट नाउ। बट इफ यू आर लिसनिंग इन अ कार, thank you so much for listening on Radio Sursangam 94.7 FM. Hamari guest Munira Nagji, she's not new to our show. She's been coming not. I think if I take you back, Munira ji, okay, welcome to the show. Sabse pehle, thank you for having me. If I take you back 10 years, 7 years, when did you start? I think you were the first one. 2010, I started India work. Yes, I think I came here, I don't remember, but many times. So we used to have only Facebook Live that time when you came. We just started brand new, and we were so amazed that time. आप जो करना चाह रही थी, and you've been doing it for so many years. Wow, so how's it going so far? So we are doing so well in Baroda, because from 𝗃𝗶𝗀𝗀 we moved to a city now. We were in a village first, and for 2 years, and then 2019 we moved to Baroda, which is a good city. Where is Baroda? It's in Gujarat. Gujarat, okay. And it's a nice city. It's a nice city. So much different from the village, Bapri. So when you were in village, how far is that village, and what was the name of the village? 𝗃𝗶𝗀𝗀 in Jamnagar. 𝗃𝗶𝗀, and now you are in Baroda. And how far is it? 8 hours drive. 8 hours drive. So what made you move from that? Because you were so settled over there, settled, right? For 2 years we are doing very so what made you move? Good progress we were making. We were at the peak of our progress. And then the landlord decided that he wants the house back. We had signed 2+2. Okay. And after 2 he said he wants the house back. And in 𝗃𝗶𝗀𝗀 nobody was renting us a house. So I'm asking, what made you decide to move to Baroda, like 8 hours I know. drive? So now I had these children. And where to go from there? Nobody would rent me a house because of the untouchables, right? So now I have to find a place for them, otherwise all my mehnat is gone. So every time, miracles work. Every time I would open Facebook, and there was a lady there all the time. Every time I would open Facebook, she would be there building a hostel for the street kids. Oh my God! Right, and I said, okay, now I have to phone her, right? Because there's some message there, right? So then I messaged and we met, and then she took all the children without a cost to me. Without a cost? Without a cost? Yeah. They've been there for 3 years now, and so grown up. और वो वहीं की है, बड़ौदा की? And she built a huge hostel for 100 children, all street kids. And our was for Juin Datta, and the hostel is पाठशाला. And all 100 kids. तो ये जो 100 kids और आपके ये 8-11 बच्चे, 9 से हम शुरू किए, अभी 6 बच्चे हैं. अच्छा, तो they're all at the same place? Yeah, and because that's why I moved to Baroda, being close to the children, right? Oh, nice. I can visit them every Sunday. Oh, nice. क्या बात है भाई. दुनिया में इतने कितने लोग हैं जिनको हमको पता भी नहीं है. सच्ची बात है. There's so many things. Right. And here we fight for small things. सही बात. We do Facebook Live, just a very minor. We do Facebook Live sometimes, especially during the pandemic. Oh, तुमने हमारा नाम mention नहीं किया. We help so much. तूने हमारा नाम mention नहीं किया. We shared for you. That's sad. And there's like people like her.
No one जिसका knows. कुछ पता नहीं. अब कुछ भी नहीं देगा. you know charity तो ऐसी होती है कि आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना वो हज़रत चले. अली का कॉल है. Yeah. सीधे हाथ से हो दो तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चलता. चाहिए. you know like इसका आप क्या दुनिया के लिए कर रहे हैं? इसका Exactly. मतलब कि आप दिखाना जो चाहते आप हैं. अपनी Yeah. यानी आखिरत के लिए कर रहे हो. हाँ. For your second life. Yeah, that's right. But बहुत बुरा मानते हैं लोग. बहुत छोटी 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 बातों I पर know. बहुत बुरा मानते हैं. बहुत गलत बात है. so you Yeah. are 8 hours from your Original place. original village. Yeah. तो वहाँ के लोगों वो को शट कर दिया मैंने, right? हाँ. तो वहाँ के लोगों को कैसा लगा when you were moving out? Oh, they said Village. there'll be a void because finally we were accepted in the village. Everybody started respecting our work, and they saw the difference in the children. And yeah, they were quite sad actually. It was nice to see that. कि कुछ But it's impact हुआ जब भी तो, right? Yeah, हाँ, yes. yeah. But they are in a better location, better Now area, they're way better, school. way better. Is there? तो वो Right, सारे yeah. बच्चे. No, it's a blessing in disguise. Yeah, Yes. yeah. अगर no doubt. लैंडलॉर्ड रिन्यू करता तो हम वहीं होते छोटे हाँ. से गांव में, not छोटे many से गांव में opportunities, right? opportunities. But this was a blessing. अब ये बच्चे जो आप केयर कर रही हैं तो कौन from what age to what age? छोटी 5 साल की हुई अभी. She अच्छा. came to me when she was 3. Okay. Wow. Yeah, she was my first one. Okay. And the oldest is 14. 14. And 11 of them. So now are they away from their parents for? Yeah, they're within the city. Huh. So 6 children are from 𝗃𝗏𝗧 still. Okay. So they followed me. Not followed, but they were new kids. I Yeah. didn't have room in 𝗃𝗏𝗧 to host them. Okay. So they said, whenever you move anywhere, you take these kids, my Okay. kids. So then we went and Oh, brought them. and parents are okay with that? Yeah. They are We went- happy? Yeah. Okay. And कि they वो were लोग- living on the streets in 𝗃𝗏𝗧. 𝗃𝗏𝗧. So what a better life, right? And the rest are from Baroda. And they all live on the streets, on the side road with 4 sticks and a tarp. Oh That's my what they God. where they live. Yeah. So it's what a difference of lifestyle also. And my 2 little ones are the children of garbage collector. Yeah, And you know, in yeah. the caste system, they are the Yeah. lowest, right? They are So, the and they are lowest, yeah. doing the best, both of them, the little ones. Is that right? Yeah. When you see them after 2-3 years or after 10 years, if you meet your kids, तो वो दिल में क्या feeling आती है, you know? See, the kids who have gone to the hostel, Yeah. we've been together for 6 years now. We started 2017 and now it's 2020. 6 years we've been together. Yeah. And every time I go visit them, they will touch my feet for blessing. They'll hug me and they'll call me mom. Yeah, of yeah. course. Right? And they confide everything. Yeah. So that's a bonding that's made in heaven or life before. That's what I believe. Yeah. That's right. माशाल्लाह Wow. Yeah, माशाल्लाह. mashallah. So then अब सबकी एज ग्रुप डिफरेंट है. सब स्कूल और जितने भी उस this lady, what's her name was again? Juindatta. 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 So this lady is providing for all their education. Oh yeah. And their clothing and their food. Activities, food, everything. Everything. And 100 kids. 100 kids. Wow, what and an she expense. is so resourceful. Like, I'm so blessed that my children went there. Their doors opened, like totally opened. So वो सारे के सारे स्कूल जाते हैं. हाँ, 100 के अभी now 100. she's made a school on site. Oh, So क्या now there's a बात है. school there, yeah, sports and you name it, they have it all. But you know, where does she get the funding? Like, She's a local, right from Baroda, and then Yeah. she's registered in India, so she gets the She CSR gets grants from the and everything, government, right? she gets I'm it. not registered there, right? Because Yeah. I'm a Right. foreigner, yeah. Yeah. So Oh, she she's gets blessed it. with funding. Oh, that's so nice. Yeah. Oh, क्या And I lived there for 3 months when the children went there to integrate them. so that get them Yeah, adjusted. then I moved out from there. Then COVID happened, right? So, Yeah. then, oh, So आप कहाँ रहते हो अब? I've been in Baroda. I rented a house as soon Okay. as I left them in Okay. 2019 January. I rented a house in Baroda. And you with the live there? planning that now I have to do next batch. 11 तो संभल गए. अच्छा. अभी next batch. So right? now you're thinking to Now, getting I have 11 kids already now in my already in house. the new yeah. bag. Yeah. Oh, in your house? Yeah. 11. Now you Yeah. will groom them? Yeah. And then they will Well, as long as I can do, I want to be with these children. groom करके उनको Yeah. अपने अच्छे उस पे Right, पहुंचाकर that level. then they can go to the Hostel. same Yeah. hostel. अरे वाह. So good transition. Right? So 6 kids went there, Right. and now 11 kids 11 you have. with me. So 17 you. So 17, before these 17 kids, कोई और तो नहीं था ना, ना, यही वाले हैं ना. एक है, हाँ. Okay, wow. So, you know, like of course we hear about India, or there are so many charities that go around, and of course, like in India is a huge country, and just to Yeah. find your kids into that school, I think it's a blessing. Just to It find the is, right and time, those right children place. probably have asked for me. Where do I find these children? People ask me, how do you find these children, Yeah. right? Yeah. So literally, I went all around Baroda when I wanted to start. I took a rickshaw, went to all the slums. Ke chalo, I want to do this work. Would you send your kids? And they would say no, because how can they trust me? I'm a foreigner, lady Yeah. alone.
things happen, right? How can you trust them? Correct. So then we understand we are parents ourselves. Then we started the same way we started in 𝗃𝗏𝗧. So 4 hours classroom in the morning, and we give them ration to the family. Back. Right. So if the children are coming, you get monthly ration. So that's an incentive. It works. It worked in 𝗃𝗏𝗧, so we did the same here. So then they came for 2 months. And then they moved in. So they were comfortable. So वो लोग comfortable हो गए और वो parents भी comfortable हो गए कि it's a genuine thing, right? Yeah. That trust is a big thing. It's this world is becoming so untrustful. It is risky. और फिर पता है ये जो they're brave parents though. They are brave parents to be sending their children. Yeah, definitely. क्योंकि आजकल child trafficking और ये सब कुछ इतनी हो रही है कि you have to be careful. चाहे कोई भी हो, चाहे वो low caste के हो. More reliability on me also because I have to keep these children safe. Yeah, that's right. डर लगता है हमेशा कुछ होगा कि go to school, you know, कि लग जाए तो. Yeah, you have to be so careful. Merciful. और जो 11 बच्चे ये from what age to what age you have? छोटी से छोटी 5 और 14. Yes. 5 to 14. Yeah, so 5, there's 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Yeah. All staggered. In a pot का set होता है ना, बर्तन का और सब स्कूल जा रहे हैं. The older ones go, the 2 little ones don't go. I'm homeschooling them because they're doing so well at home. So foundation in math and English strong बना के फिर भेजूंगी next year school. अच्छा. That's good. And छोटी है, इतनी सी no. अच्छा. तो आप जब यहाँ आते हो, तो then you do some fundraising for them from we here? Always try, right? And we do these shows and and friends, normally friends ke friends. They help. They're always helping out. And that's how the work has gone for so long. Yeah, that's right. That's right. So we have Munira Nagji like in our studio. She's from the Acts of Love, जो कि अपना charitable foundation है, and she will be raising fund tomorrow. Special जो है session है, but of course we are talking about कि क्या हुआ पिछले साल or especially during pandemic. How was the pandemic for you guys? Pandemic, then I had to come back home. Right. So you were here that. In India, I was in March, and the lockdown started, and then I came back. Okay. Yeah. Then I went back in November again. Okay. When only OCI holders could go, no one else could go. The flights were not open for all. So and I'm so glad I went in November that time. And December we started our work again. So then the school started back. Yeah, and then again there was my Noshin passed away. So then I came back home again. Then again November I went back again and started again. We are such a commander lady. Yeah. So do you still get volunteers from Canada? From Calgary? In 𝗃𝗏𝗧 when they were there for 2 years, loads of volunteers, especially from Calgary. Such fun in such a small house, you know. Loads of them. But with COVID, nobody could come. Right. And then Yamuna was our first volunteer in Sahara. She came during COVID. No, before COVID. And she was there for 3 months. She's going to speak at the session tomorrow, her experience. So tell us what is happening tomorrow. So tomorrow we are doing a presentation. There is no food or drink or no entrance fee. It's a free event. It's a free event. Just awareness ke hum log kya kar rahe hain, what we need, what our needs are now, especially now as we are growing. Children are growing and we are co-ed, so boys and girls are together. So now boys are getting older. So it's risky to have them together. So now we are looking to rent another house which is so close to us, so I can keep an eye on both. Right. So then expenses double ho gaye. Right. So that's what we are looking for, and scholarship in Noshin's name also for the older girls, because older girls jo hamari 14 saal ki hai, they're in grade 1 and 2. So when are they going to finish grade 12? No way, right? By the time they're 18, they'll get married off. Hopefully not when we are here. But they have to have some skill to survive. So we are concentrating. That's why they go to Kumon, English and math. So do you have Kumon over there? All of them go. You have Kumon in India? Oh, nice. And they're excelling in Kumon. Nice. So all 11 go. That's my major part of my expense also. Kumon is very expensive. Even here we could not afford. No, yes, it's expensive. Very expensive. And they're doing very well. So they need a little fast forwarding in their skills, right? School mein they are not going to make it. That's the little ones will catch up, hopefully. Public school hota hai, itne sare bacche hote they don't give especially special cake ko. No, so many children, especially in India, right? But they go to a good school. It's a private school in the morning. All the rich kids go there, one of the best schools in Baroda. And so only 4-minute walk from our home. And in the afternoon, the founder was so brave, she opened it for the underprivileged children.
So no fees, but we use the same curriculum, we use the same desk and everything. Food, they give a meal, uniforms, bags, shoes, socks, to the T, no charge. Wow. And this lady, she is has her family, has any children, or she's by herself? The one who's running the school? Yeah. It's a huge school. No, but this lady, she has a family, her kids, she has. The one in the hostel. Yeah. Yeah, that is different than the school that we are going to. Yeah. Oh, wow. That's so great, you know. When we hear the stories, it's just an eye opener for us. Everything we just take it for granted. And it's nice to talk about it. When you ask me to talk about the children, I get also charged up. Yeah. Right? That I'm doing, not I, but all of us together are doing good. Right? अकेले से तो नहीं होता. नहीं होता, of course. So आप बताएंगे कल कितने बजे है, कहाँ पर है, तो लोगों को पता चले, वो लोग आपको, और अगर जो नहीं पहुंच सकते वो किस तरह से डोनेट कर सकते हैं. राइट, तो कल 6 बजे डोर्स खुलेंगे. कार्डेल थिएटर में है हमारा सेशन. इट्स अ थिएटर सेटिंग. और 6 बजे डोर्स खोलेंगे, 7 बजे हम प्रेजेंटेशन चालू करेंगे. देयर इज नो एंट्रेंस फी एट ऑल, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट. ओके. Okay, so it's at 7 p.m. at a Cardial Theatre, जो कि अपना Quarry Park में है. The address is 180 Quarry Park Boulevard, Southeast, Calgary. For more information, call 587-777-0678. 587-777-0678. Yeah, Maya or Salma ji, you can call us. You can send us a message as well. We can guide you the address. Thank you. It's very easy. Or ये जो है Munira ji, she's been coming on our show for last 10 years, and me and Salma ji can guarantee you कि अगर आप $5 भी देंगे, it will go to the poor kids. Guaranteed. Drop by drop. Yes. Oh, sorry. Like जो है unfortunate kids, I should say. तो कुछ भी डोनेट करना आप फोन से कर सकते हैं. बट विल आस्क इफ समवन कैन डोनेट हाउ दे, और मे बी ई ट्रांसफर, या तो चेक ड्रॉप कर दें, या तो कैश ई ट्रांसफर कर दें. सो ईच एंड एवरी पेनी, ईच एंड एवरी पेनी. ई ट्रांसफर के लिए ईमेल कौन सा यूज करें? तो इट्स दिस info@theseactsoflove हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है. theseactsoflove.com. These acts of love. THESE. theseactsoflove.com. info@ तो वहाँ पर जो कल जो इवेंट होने वाला है, वहाँ पर आपके जो है ऑडियो विजुअल एक जो है प्रेजेंटेशन होगी. आपके अवेयरनेस के लिए बताएंगे कि ये पैसा कहाँ जाएगा आपका. दे विल हैव सम वीडियो प्रेजेंटेशन, ऑडियो प्रेजेंटेशन, इन्फॉर्मेशन जो है नहीं कि अपना सेशन होगा. तो ये एक हॉल खुद ही रेंट करके अपने पैसे से दे आर डूइंग इट. दिस होपफुली एवरीवन कैन पिंच इन, एटलीस्ट गो और खाली इन्फॉर्मेशन ले लें, देन यू कैन डोनेट नेक्स्ट डे. लाइक अगर वो ऐसा नहीं, गारंटी आपका हार्ट शिफ्ट हो जाएगा सुन के. यस, या फिर देना इज आसान है ना. या तो प्लीज डू. कुछ भी हो सके, $5, $10, $100, $200, whatever. तो ईच एंड एवरी जो है डोनेशन विल गो टू द जो है and on जो है क्या बोल अनफॉर्चुनेट किड्स. we can guarantee you अगर आए और $20 भी दें, तो can you imagine कितना जमा हो जाएगा. That is so amazing to do that, you know. नहीं इंशाल्लाह जो है everything will be fine. So we'll take a commercial break. फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाना कहीं नहीं. You are listening to Salaam Namaste Calgary on Radio Sursangam 94.7 FM. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ. ਮੈਟਰੈਸ, ਸੋਫਾ ਸੈਟ, ਅਪਲਾਇੰਸਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸਨਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੁੱਜੋ. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੀਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਤਾ ਹੈ 3451 ਸਨਰਿਜ ਵੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ. ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403 726 6200 403 726 6200. ਬਈ ਜਿੰਦਰਾ ਮੈਲ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐ. ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ. ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫॉर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप, LMIA, परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स. कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004.
ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3690 ਵੈਸਟਵਿੰਡ ਡਰਾਈਵ, ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 7171 80 ਐਵਨਿਊ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 6520 ਫਾਲਕਨਰਿਜ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਚੌਥੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 606 ਸਿਟੀਸਕੇਪ ਸਕੁਅਰ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 4038352222। नमस्ते भैन जी, बड़ी देर बाद फोन कीता, किथे रहिंदे हो? रहना किथे है भैन जी, इसे वीकेंड ते थोड़े घर आवांगे, पर कुछ वधिया जा खवायो। जदों दे आया तरस गए इंडिया दे स्वाद नूं। ले ये केड़ी गल है, तुसी आओ ते सही। कैलगरी दा मशहूर नमस्ते इंडिया बफे एंड चाट हाउस, स्वाद ते क्वालिटी नंबर 1, वेज नॉन वेज हर एक चीज कमाल दा स्वाद, बस उंगला चटदे रह जाओगे। स्नैक्स च ऑर्डर करो हर तरह दी चाट, गर्मा गर्म पकौड़े वेज जां नॉन वेज, टिक्कियां छोले, नूडल्स, स्पेशल तंदूरी चिकन, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, गोट करी ते होर आइटमां दा वड्डा खजाना। आउटडोर केटरिंग फूड ट्रक दे नाल करदे ने। डेस्टिनेशन वेडिंग जां किसी भी समागम लई केटरिंग ते रोटी दे सस्ते रेट लई भी कॉल करो 4035905434, यूनिट 45075 फॉल्कनरिज बुलेवर्ड, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। जी हाँ, वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते कैलगरी विद मी एंड सलमा जी। और एक और हमारे स्पॉन्सर है रियल्टर आसिम नवी। इनका कहना है द रियल्टर यू कैन डिपेंड ऑन 4034042746 4034042746। इफ यू आर सेलिंग और बाइंग कॉल आसिम नवीद। एंड ऑफ कोर्स वी हैव मुनीरा नागजी फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ लव। इनका कल सेशन होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल इनका इंफॉर्मेशन सेशन है फॉर द एक्ट्स ऑफ लव। इट्स एट द कार्डल थिएटर जो कि अपना क्वेरी पार्क में है। सो प्लीज़ आप विजिट करें। और कल हम इसका जो है अपना ई ट्रांसफर का ईमेल भी हम जो है शेयर कर देंगे विच यू गाइस। यू कैन डोनेट एनी अमाउंट, देयर इज नो स्मॉल और लार्ज अमाउंट, एनी अमाउंट प्लीज डू, दैट विल हेल्प सम unfortunate kids. This is auto deposit, you can. Yes. Yeah, that's great. So that is no problem. Then you can, yeah. तो वहाँ पर कौन कौन होगा ये आपके तो सेशन में? का समर कल कल के सेशन में anyone can come. No, you and who else? Farhana. Okay, Farhana. Farhana is our new board member, okay. And she came to volunteer there for 3 weeks, and now she's seen at first hand like what it is. And she can tell. I can brag all I like. Yeah, that's right. कौन आते हैं मेरे को पूछने? Right. सही बात है. But she came, she saw, and she was यही तो साथ होता है जब इंसान यहाँ से बैठकर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब वहाँ जाके काम करा और जाके देखी सिचुएशन, वो आके सारा कुछ बताएं तो वो तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना। उनका एक्सपीरियंस मेक्स अ डिफरेंस। मैं तो यूज्ड टू हो गई अभी। आप तो यूज्ड टू, yeah, that's right, yeah. It's not easy. So how do the volunteers, जो करना चाहते हैं volunteer, तो उनकी कोई क्राइटेरिया होता है कि हाउ दे कम एंड डू इट, उसका कुछ बताएंगे अगर कोई करना चाहे? नॉर्मली अदर जो NGOs होते हैं उनमें यू हैव टू पे फॉर द लॉजिंग आल्सो। आई बिलीव कि दैट इज नॉट फेयर। यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी टू कम देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकिंग टाइम ऑफ। तो वी प्रोवाइड लॉजिंग एंड फूड, व्हाट वी ईट दे ईट, वी स्टे इन द सेम हाउस एंड इट्स नाइस टू दे इन द सेम हाउस बिकॉज सुबह उठने से रूटीन हो जाता है, फराना कॉमिंग द किड्स हेयर, खुद को भी सेटिस्फेक्शन होता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। दे सी ऑल द चैलेंजेस ड्यूरिंग द डे। तो अगर होटल में रहते हैं तो कब आएंगे देखने के लिए चैलेंजेस? हम तो वी कैन मेक इट नाइस एंड रोज। नो बट हाउ डू दीज पीपल, जैसे फरहाना थी, हाउ डिड शी फाइंड आउट अबाउट दिस थिंग? सो शी सॉ माय पोस्ट ऑन फेसबुक एंड देन हर aunt also recommended that she look into my work, so that's how she got into it. So it's always a word of mouth also. Word of mouth also. I'm so. तो आपके साल में कितने volunteers आ जाते होंगे? COVID के बाद only one. And so far, अभी तक एक ही आया है? Two. One another Calgarian came recently. Yeah. Sarah Kasam. Yeah. So two so far. Yeah.
चलो तो ये लोग को word of mouth through the Facebook, through you friends, people find out. Right. And I'm quite active on Facebook. Yeah, posting you are. every Yeah, day. yeah. Yes, you do. That helps. And I always respond to you. That And I helps. want to bring about what my children are achieving, right? And your money is going to a good cause. To the right place. No, it's a good thing Right? to do. Yeah, Keep you up. know it. You know, update होती रहती है ना. तो अच्छा भी लगता है ना कि That's हमारे a- पैसे कहाँ जाते जाने हैं. It's making a difference. बिल्कुल. अगर all other non-profits when they are advertising तो वही का वही sad face होता है. Yeah. Nothing's improving. Yeah. But I want to show कि यहाँ से यहाँ मेरे बच्चे आए आगे. Yeah, of Your course. money is working. Working. I don't want to show the sad faces all over and No, over no, again to no, get no, money. no. है ना? Yeah. And to go forward, I'll need more. Yeah, of Right? To course. make an impact. To make it more Yeah, good right? faces and happy faces. Oh, right? they when I teach you these children, Eastern and Western इतने अच्छे look में. Yeah. So of course, जो आपको मिलता है donation, so then you buy food, clothing, books, bags, everything, right? And we School. have a teacher coming at home, Teacher right? as So well. salaries nice. निकलती है. Wow. And we also have a project in the slums, right? We have a teacher, we have hired a teacher who goes in the slums to teach अरे every day, वाह, yeah. 6 days वहाँ a week. local है वो. हाँ, local, हाँ. Oh, nice. Yeah, I used to go there during pandemic for 2 years, अरे वाह. 40 kids, but now I can't do both. So Both, then they right. hired a teacher to go there. अरे And, वाह, क्या yeah. बात है. Oh, That also wow. trust, right? Because I had to go and give them food all the time. Yeah. And then they just started trusting me, and they're all Muslims. So thoda sa, Yeah. वाह, क्या बात है, क्या बात है. So Wow. easy, but you can Yeah, find yeah. जो इनका page है Facebook पे, then you'll see all the videos, pictures and everything. Acts of Love, Love, am I right? yes. Acts of Love. And अपना any website, actsoflove.com? Theseactsoflove.com. Theseactsoflove.com. Okay, Many perfect. acts of love. Yeah, there are That's true, definitely that's true. there are so many. तो अच्छा, I'm glad कि इस तरह volunteer. So कोई भी Anyone उसकी can. कोई that volunteer has to have certain criteria of education of anything. No, they should compassion, heart. compassion and Come heart. with a heart. Yeah, That's that- it. that Red is- heart. Yeah, red heart. Yeah, so Right? And that's all we need. yeah, The rest follows. yeah, Yeah. and anyone. And I can think we've come. already said this in your shows. The rest will follow. Yeah. Yeah. So anybody can come. Yes. And they could be from what age to what age? Like So long they can youngest take a how? nap. Youngest कितनी age होनी 20 चाहिए? के बाद, because it's 20 challenging in के बाद India, ना? na, whether they can survive or no, हमसे ना. Yeah. So it's good to know, like anybody Yeah. who's listening to you, they know कि भाई अगर उनकी बेटी अपने resume में डालना Right? चाहे, We had right? Madina Sajan. She Madina was only came. 24 when Yeah, she came. yeah, She I stayed for know. 3 months. Yeah. She was our youngest probably. Yeah. So this is what I wanted to. It was challenging you for the first few days days. also, right? But then She got it, you get yeah, used to it, yeah, adjust हो yeah. जाते हैं ना. फिर जब इतना comfort और इतना बच्चे इतना प्यार satisfaction करते मिलता है हैं, ना. right? And then you're okay. Yeah. So good. It's good to know. And during they can come any time of the year. So only May when I come home, and November, December when I come home. Those are the 2 times that no volunteers. No volunteers. Yeah. But other than that, they can we are come there. anytime. Yes. Okay. That's good to know. Because see, अगर कोई आना चाहे तो अभी ये. summer vacation होगी जून में यहाँ पे, हाँ. right? Yeah. So we July, are back in August में school. हाँ. हाँ. Yeah. वो And आना चाहे. it's good for the resume also. Yeah, of course that. And उसके अलावा भी it counts, when you have done something, like people when they're applying for their education also, and their interviews are not about what they are going to do. Yeah, it's all about nowadays it's what all you have done. And that's how it started, my work with Noshin. She wanted to go in med school. Yeah, and that's why she went to volunteer in India, and that's my first step to That's this how work. it started. Yeah, Oh yeah. my God, this is So good that's how to it know. began. So nice. Yeah, that's amazing. How it started. Yeah, And it will take you far, this kind of seva. of course. Right? Yeah, of course. Both This what we worldly believe. and Yes. ऊपर से भी दोनों. This what we believe as well. Yeah, that's how. ये it आपको should. बहुत काम आएंगे इस तरह की सेवा. Right. Yeah, बिल्कुल. आप अपने में नहीं तो आपके बच्चों में जरूर होगी, गारंटी. Right? और ये हमेशा कहती हूँ कि बच्चे ना वर्बली दुआ नहीं दे सकते आप लोगों को. जैसे वॉलंटियर्स आते हैं, Yeah. डोनेशंस मिलते हैं, बच्चे वर्बली नहीं बोल सकते. उसका मगर इनके fraction. तेरा बोलते हैं ना, रिब्स बोलती हैं इनकी. Yeah. Thank you. And that is the most powerful dua. Most powerful. Yeah. True. Yeah, that's right. That's right. तो This कल is- इनका शो कल इनका जो इन्फॉर्मेशन सेशन होने जा रहा है एट जो है कार्डल प्लेस 7 PM, डोर्स ओपन एट 6. इट्स अ फ्री इवेंट, लाइक जस्ट कम एंड इनकी जो इन्फॉर्मेशन जो है अपना सेशन होगा, जस्ट हैव अ लुक. ऑडियो विजुअल भी होगा, सब अपना वीडियोस भी होंगी, एंड ऑफ कोर्स मुनीरा नागजी विल बी देयर, फरहाना विल बी देयर, इंशाल्लाह वी विल बी देयर एज वेल, एंड यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट और ऑल द इन्फो यू कैन
and then you can donate if you can. Yeah. कोई force नहीं है, but just come But and enjoy. And then hopefully you can help them out as well. I think this is great. That is so important, you know. Like, so what are you looking कि अब future में क्या होगा इन बच्चों का? What are your thoughts so about those it? 4 girls, they're older, right? 14 to 12. ठीक है. They'll have to move on to some vocational college. Right. तो उनकी funding चाहिएगी. सही right? बात है. So somewhere they have to learn a skill. Yeah. Yeah. So that's what we are looking for. And to set up another house for the boys. So now instead of 11, now we can help 22 kids. All right. So the expenses double already. Double हो गया, right. Teachers का, house का, everything doubles up. और अगर सपोजिंग इनमें से कोई बच्चे लड़का या लड़की कह के मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो कब तक उनको आप एजुकेशन देते हैं? उसके बाद वो क्या करना? ग्रेड 10 इज मैक्सिमम कंपल्सरी ना. 10 अगर होगा तो यू कैन गो टू वोकेशनल कॉलेज. तो वी हैव टू मेक श्योर दे गेट टू दे फिनिश दैट ग्रेड 10 somehow the other. So that उसके बाद ये स्कूल का क्या एडवांटेज है कि विद इन अ ईयर दे कैन जंप 2 grades if they're doing well. So वुमन है, घर में टीचर है, स्कूल है, होपफुली all this combined we can jump 2 grades a year. So hopefully we get faster. Yeah. So maximum grade 10 tak they have to study. And then they can vocational college. Any kind of training they can go to, and according to the interest. Right? And then they can support their family. Yeah, हमारे यहाँ घर में chef है, artist है, they can all pursue those, right? Of course. They don't have to have an engineering degree, right? You know, like most important way कि they have to be really street smart. Right. And humanity. That is very pay it forward important. also. Yeah. Pay it forward. Yeah. Whatever you become in life, you have to pay it forward. हम अभी से सिखाते हैं बच्चों को जिसका बर्थडे होता है, तो we go to the slums on that day. This child will particularly give to the kids food or stationeries or something or the other, but give on that day on of that their birthday of the child. child. What a good, you know, example से सीखेंगे, बोलने से तो नहीं सीखने वाले, right? Example से सीखेंगे, सही बात है, सही बात. और जब मिलता है तो हम तो ले लेते हैं पेट भर के, मगर देना भी तो है. देना भी तो है. True. Yeah, and these and they realize when they go to the slums कि how lucky they are. Yeah. They do realize. क्योंकि वो देखते हैं कि सब जो हो रहा है ये काम, ये सबकी डोनेशन है. हाँ, right. कोई तो काम करते हैं आपके लिए. I always tell them somebody is working 9 to 5 there to help give you all this, right? जैसे हम जीवापुर में जाते थे एवरी सैटरडे को स्लम्स में टीच करने के लिए, तो बड़ी सिस्टम क्या था कि जब स्लम्स में जाएंगे तो एक लड़का एक बच्चे को लेके पढ़ाएगा. फर्स्ट डे वी वेंट, all the kids came back running in 2 minutes. Oh, we can't be with these kids. They're sweating, they're stinking, and this and that. No. I said, you forgot where you came from. So that was a good lesson for me also. Okay, this is to be done. So we follow that model until now. Nice. Yeah. I know. They forget, right? In the comforts, kam kya the? So abhi now they're grown up, the hostel children. They're able to see in the emails the pictures that I took when they joined me, and they say, wow, now it makes sense how far we have come. Until then we forget what we were. Now they see the pictures and say, wow, we were that. Yeah, बच्चे हैं ना उनको भी. So अभी impact हो रहा है इन लोगों को. हो रहा है ना. Good. You know, we broke that cycle of poverty. Good for them. Yeah. Okay, and good for and you. they said they'll take my work forward. इतना अच्छा सा letter लिखे था, I तो cried reading that letter. Anytime you need anything, we are going to move your work forward as soon as they're able to. So I have total confidence they'll take over my work in future. Nice. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी. ना, this is so amazing. Satisfying. Isn't it? And it's so humbling. And give me himmat also. It's the right path we are doing, the right model we are doing. Everything is right. First batch हमारा इतना अच्छा निकला. The second it's a better hoga because I've learned. That's what I was going to say. You learned by experience how you did in the first. Maybe and age this also, will work, that will work. And more patience, right? Yeah, more patience you need as you end. So what do you think? Okay, you are one Munira Nagji. Okay, there are no clones of you. But now, have you thought about, of course you have to think मेरे बाद क्या होगा? Have you thought about it? Yeah. So now we are on a lookout for somebody who can stay with me for full time. Little bit full time वहाँ पे. तो वो सीख जाए सब कुछ. सीख जाएगी और emergency यहाँ family है. तो आप किसको, who are you looking for?
So someone who's a little educated. बिल्कुल uneducated नहीं चलेगा because they have to do social work. वो वहाँ की भी हो सकती है, यहाँ की भी हो सकती है. Most probably local first because वहाँ के rules, regulations, culture. I also have to learn the culture. हम तो जोर से चाहते will do this. But it doesn't work. Culture is different, right? We have to go slow and easy and integrate and blend in. Yeah. So are you in a lookout for somebody? Oh yeah. Already. Yeah. Good for you. Yeah. And it'll be nice if the volunteers could come, and if I have to come with emergency here for my children or family, somebody from here could just be there so that other person, we know everything is right. It's so hard to trust anyone with the children. किसी और के बच्चे, कितनी liability है मेरे ऊपर, right? बहुत बड़ी liability. हमारे सामने तो सब अच्छे बनते हैं, पीछे से क्या करते हैं? पता नहीं. It's very risky. Yeah. So we I have to hope tread you carefully. find somebody like you. I pray so. Oh my God, this is so amazing. Yeah. You know, हम लोग बात आपसे करते हैं ना. It is so impactful and लेकिन पता नहीं दुनिया इस तरह की है कि इंसान फिर थोड़े दिन आप नहीं आते तो आहिस्ता आहिस्ता सब इंसान भूलने लग जाता है. But then it is such a refresher. You come back, we call you, and it again. It sparks again. Yeah, it sparks again, refreshes them. And universe has its own timeline. Universe has its own timeline. जिसको आना है, जिसको करना है, वो करेगा ही. There is no escaping that. No, but their spark has to light तो चलानी है थोड़ी लगा. चलाते रहना चाहिए. You need awareness, you know. Yeah. That's right. That's right. Now, I hope you find somebody just like you, because you know. जाना तो सबको है इस दुनिया से, लेकिन when you leave somebody reliable कि वो मेरा जैसा काम करता रहे, वो बहुत ज्यादा important होगा ना आपके लिए. जी, that's so nice. We'll take one more commercial break. Yeah. We'll be right back. You are listening to Salaam Namaste Calgary on Radio Sursangam 94.7 FM. जो हमें Facebook पर देख रहे हैं, so I just put इनकी जो website का address है on the Facebook comment, theseactsoflove.com. So if you want to donate, please go ahead now, and any amount is a blessing. So please do so. So we'll be right back. Thank you. संगम है प्यार दा, संगम सभ्याचार दा, सबदा प्यारा ए सुर संगम. संगम संगीत बहारा दा, टॉक शो विचारा दा, सबदा ए साथी ए सुर संगम. हर समय तुहाडे संग, तुहाडा अपना, ये है रेडियो सुर संगम. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ ਪਹੁੰਚੋ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ. 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ. ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਾਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ शर्मा नाल संपर्क करो, जिन्हां दा फोन नंबर है 403 903 6757 403 903 6757. थोड़े घर की निशानी होंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान. ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा सामान. फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम. अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुजो. 2935 19th स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. कैलगरी कारपेट एम्पायर. फोन नंबर 403 510 1515. 2935 19th स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पूरा साल हो गया गाना सुनती नूं, बस गीत सुन के कैलगरी च घर लैण दी फीलिंग आई ले जाओ. एक गल होर, वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है. बस उन्हां दे आउण तो पहला मैनू घर चाहिदा है, बाद विच उन्हां दे घर बारे भी सोचना कुछ. ओ भागवान ने हुण गीत दी फीलिंगां नूं सच करन दा टाइम आ गया है. मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ढिल्लों होरां नाल, जिन्हां दी सलाह नाल हुण घर एक नहीं दो लवांगे. दो घर? आहो, पहला अपने लिए तो दूजा तेरे वीरे ਲਈ. मैं कल दी अपॉइंटमेंट ਲਈ है जग्गी ढिल्लों तो. मैं सुनिया जग्गी ढिल्लों पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझाउंदे है. जी हाँ, तुसीं भी
ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 4036162445 4036162445। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, RESP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403 404 3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਇਰਸ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਹਿਊਜ ਰੇਂਜ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਅਰਥ ਮੂਵਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਟਾਇਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ, ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ 8009770010 800-977-0010। ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਮੈਟਰੈਸ, ਸੋਫਾ ਸੈਟ, ਅਪਲਾਇੰਸਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸਨਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੁੱਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੀਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਹੈ 3451 ਸਨਰਿਜ ਵੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403 726 6200 403 726 6200। ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮੈਣ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫॉर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप, LMIA, परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स। कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3690 ਵੈਸਟਫਿੰਡ ਡਰਾਈਵ, ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 7171 80 एवेन्यू, तीजी लोकेशन 6520 फॉल्किनरिज बुलेवर्ड, चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वेयर। साझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां चारे लोकेशनां दा साझा फोन नंबर है 4038352222। नमस्ते भैन जी, बड़ी देर बाद फोन कीता, किथे रहिंदे हो? रहना किथे है भैन जी, इसे वीकेंड ते तुहाडे घर आवांगे, पर कुछ वधिया जिहा खवायो। जदों दे आए तरस गए इंडिया दे स्वाद नूं। ले ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਮਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਫੇ ਐਂਡ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੰਬਰ 1, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਬਸ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸਨੈਕਸ ਚ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਟ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ, ਵੈਜ ਜਾਂ ਨਾਨ ਵੈਜ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਛੋਲੇ, ਨੂਡਲਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ, ਗੋਟ ਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਆਊਟਡੋਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 4035905434। यूनिट 450-75 फॉल्कनरिज बुलेवर्ड, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। Welcome back to Salaam Namaste Calgary on Radio Sursangam 94.7 FM. इसको स्पॉन्सर किया वन मोर स्पॉन्सर रियल्टर आसिम नवीद। इनका नंबर है 4034042746। इनका कहना है द रियल्टर यू कैन डिपेंड ऑन। इफ यू बाइंग और सेलिंग कॉल आसिम नवीद 403-404-2746. So we have Salma ji here and of course Munira Nagji। इनका कल इवेंट होने जा रहा है at 𝗃𝗏𝗀 थिएटर जो कि क्वेरी पार्क में है। एड्रेस है 180 क्वेरी पार्क बुलेवर्ड, साउथ ईस्ट कैलगरी, अल्बर्टा। अगर आप डियरफुट लें, इसके बाद ग्लेनमोर
ईस्ट लें and then you take 18th street, तो ये वहीं जाकर आता है. It's very easy. From northeast, it'll take you about 15-20 minutes maximum. Doors open at 6:30. You can, but इनका जो information session start at 7 p.m. So get there by 7, leaves your home at 6:30. I would say 6 o'clock. तो आप easily वहाँ पहुँच जाएंगे. And please donate any amount you can. There is no small or large amount. Like I said earlier, any amount is a blessing.